are starting our batch from 16th of August. Timing will be 6 to 9. Let me introduce myself. I am Dr. Sudhir Kumar. I am a dental surgeon. I have served in CRPF for 4.5 years. I am a research scholar in anthropology. I have given 5 interviews for UPSC. Okay, and I've been teaching for UPSC for last 8 years, right? And anthropology is my specialization now. Okay, so that's what I am, right? And in this program that we are starting from 16th of August, our focus primarily will be on conceptual clarity. Okay, at the same time you will receive notes that you need to read. Okay, the notes that I will provide you, that will be sufficient to cover everything that is being asked. At the same time you will receive dictation, right, with the class. जो भी आपको मैंने समझाया, you will note it down in your booklet so that you have short notes that you can revise on. All the case studies that you need to read, everything will be discussed in the class itself. Anything that is of value addition will be discussed in the class itself, right? I will tell you how to link one topic with the other, how paper 1 with the paper 2. Everything will be discussed here. Now, this is the general thing, right? The tests will be on a daily basis. Every day we'll have, you can say, one or the other question answer, right? I will provide you the question, you have to write, and then I will tell you how to write, how not to write. Okay? Now, in anthropology, what you study, do you have the gross idea about it or not? What is anthropology? So anthropology is the study about humans, that means study of us. The word anthropology is derived from 2 terms, anthropos and logos. Okay, anthropos means human, logos means scientific study. So it is scientific study of humans, and it studies everywhere. That means whether a person live in a village or live in the tribal pocket, tribal village, or in the urban area, everywhere. So it is study over space. It studies, you can say, time dimension also. Past, present, and how we will be in future. Everything is studied under anthropology. Now, if you talk about, see that what we are going to study in it, the syllabus. So, in a sense, anthropology study the social, biological, linguistic, as well as past aspect of humankind, right? Everything is being studied in anthropology. Okay, why we study anthropology? Anybody can ask that why anthropology as a discipline, right? Irrespective of that in civil services, or why anthropology is necessary for our, you can say, why do you want to study humans at all? What is the need? Okay, environmental concern can be one. What else? Global warming can be one. Okay. Environment, global warming, we can categorize into one. What can be the other important reason that why we are studying humans? Why do you want to understand behavior of humans? Okay, to predict how they behave, right? Can you really predict? It's very subjective. To some extent we can predict, yes, you're right. See, we humans are afflicted with so many problems in all walks of our life. Whether it is COVID that we are undergoing right now even, right? The masks are mandatory now, okay? We are suffering from the problems of communalism, casteism, regionalism, ethnic violence, underdevelopment, poverty, isn't it? Or n number of problems.
These are the problems of social dimension. Some of the problems are biological in nature. Some of the problems are due to the linguistic differences. Isn't it? Linguistic chauvinism you might have heard. So study of anthropology is basically to better understand humans so that we can solve their practical problems. Okay? Why anthropology in civil services? Because ultimately administration deals with the problems of humans. How anthropology can contribute to the administration? See, if you understand humans in a holistic manner, you can provide better, lasting and more acceptable solution than anybody else can provide. Do you understand what I am saying? See, administrators are making policies, they are implementing policies for the welfare of rural people, tribal people, urban people, but still they are unable to make you can say a dynamic shift towards development, sustainable development. So my friend called that sustainable development ke liye karte hain. Okay? If we study them properly, if we understand that what people actually want, we can provide them better solution. ठीक है? हम उनको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं जो कि उनको सही में जरूरत है. ओके? अगर मेरी प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ के एक पॉलिसी बनाओगे, I will accept it, right? Because it is including what I actually need. So the outcome oriented approach that you might have heard about outcome oriented approach in the GS classes. You might have been listening to this word, that Niti Aayog and other government documents, they talk about outcome oriented approach. That means whatever policy is being made, it must bring a significant shift in the development of the people. Okay, that is what is being demanded. That is what we need. Because if we want a developed India, we have to solve the problems. We have to make our country more accepting, more tolerant towards the differing ideas, right? And whatever the contradictory factors are there, we must try to eliminate them slowly and steadily. That is what is there. And if we can understand people properly, we can make better policies which will be more acceptable. So naturally it contributes to administration. Okay? Now, syllabus, we have discussed in the last session also that what we are going to study. Okay? So today my focus will be on that what is the nature of anthropology, this discipline nowadays. Okay? Is there any significant shift in the paper pattern? Okay? A little bit of the brief background I will give you. That paper is divided into that, but I will primarily be talking about the trend of the paper so that I can tell you that how you have to approach this paper. Is it clear? Okay. So anthropology optional paper, there are two papers. Paper 1 and paper 2. Paper 1 is general anthropology. I believe all of you know about it, or if you do not know, then please follow this, it will be helpful. It is general anthropology, and general anthropology we can generally categorize into 4 sub branches, that is biological. Earlier it was known as physical anthropology. Okay? Socio-cultural. Okay? Linguistic. And archaeological. These are the 4 major sub branches that are there, and we study all of them in paper 1. In paper 2, we have the application of anthropology in Indian settings.
Okay, primarily it has, you can say, first portion Indian society, and tribes. At the same time, we have unit 1.1 to 1.3, that is Indian archaeology. And even paleoanthropology. The word paleo indicates old fossils. ठीक है, extinct humans की एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, जैसे कि आपने नर्मदा मैन का नाम सुना होगा. सुना है नर्मदा मैन? रामापिथेकस का नाम सुना है ना? तो उनको जो स्टडी करना, रामापिथेकस वाज ए एप, नर्मदा मैन वाज होमो इरेक्टस. ठीक है, सो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज. ठीक है, एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज की स्टडी भी हम इसमें करते हैं. ओके, इंडियन सोसाइटी में दैट वी विल स्टडी हियर डेमोग्राफी, लाइक इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, क्या कितनी अलग अलग रेसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं. वी स्टडी हियर लैंग्वेजेस. ओके, वी स्टडी हियर यू कैन से द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इट्स थ्योरीज एटसेट्रा. Okay, then we study here caste, varna. We study how Indian society is undergoing change, what are the indigenous processes of change, what are the exogenous processes of change. Okay, all those aspects. You might have heard few words like Sanskritization. सुना है नाम? Sanskritization? क्या होता है Sanskritization? No, no, it is not about rural urban. It is about lower caste, upper caste. Lower caste people imitate the practices of the upper caste and try to become like them. That is what Sanskritization, by adopting the practices of the upper caste groups. ठीक है, वो Sanskritization होता है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे. Modernization, Westernization, that also we study here. Tribes में, tribes, their demographic attributes, their problems, right? What are the nature of those problems, how we can solve them, what is the problem of regionalism, etc., etc. We study here in paper 2. And in this paper 1, you know that biological, in this part we study origin and evolution of man, we study genetics, okay, we study human races, we study human adaptation to different environments, we study what kind of environments you can say that we are adapted to. We live in highland regions. हम कश्मीर में भी तो रहते हैं, पहाड़ों पे. We live in the coastal regions, isn't it? We live in the deserts, isn't it? We live in the forested regions. अलग अलग habitat में अलग अलग challenges हैं. Right? And we deal with those challenges through our biological means as well as cultural means. Cultural means कौन से होंगे? खाना किस तरह का खाते हो, okay? कपड़ा किस तरह का पहनते हो, घर किस तरह का है, right? If you just go to the Kashmir, then you will find that the housing structure is different. Okay? If you go to Kerala, housing structure is different. If you go to Rajasthan, housing structure is different. Isn't it? There are hardly any windows in Rajasthan homes, but in Kerala home there will be more and more windows. Isn't it? होंगी ना, केरला के अंदर घर जाके देखोगे बहुत सारी विंडोज होंगी. राजस्थान में विंडोज कम होंगी, बिकॉज राजस्थान में लू चलती है. केरला में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जितना एयर क्रॉसिंग होगा, जितना वेंटिलेशन होगा, उतना घर ठंडा रहेगा, नॉर्मल रहेगा. ज्यादा मॉइस्चर अगर रूम के अंदर है तो वो अपने आप हीट अप होने लगेगा. Is it clear? ठीक है. So हम इसमें adaptation पढ़ते हैं. We study here diseases also, right? Like COVID, etc. जितनी भी diseases हैं, that can be genetic disease, that can be infectious disease. We talk about them, right? There are many diseases. Like you say that some diseases are caused by infectious agents, right? But tribals believe that diseases are caused by witchcraft, sorcery, right?
You might have seen this movie recently, Bhool Bhulaiya 2. In that, her sister do that tearing of the cloth of her own sister. So, magic karna chahti hai uspe. Isn't it? That magic is sometimes it causes disease in tribal people because they believe in it. They believe that disease is caused by magic, witchcraft, sorcery. It's sometimes due to soul loss, soul intrusion. ठीक है? So हम believe करते हैं that disease is caused by biological factors. Okay? But tribals have different belief and they do believe in it. There is few, you can say, tribes. I think in the last session I told you about the Kuru disease, right? If someone was there, right? So Kuru is a disease which is found among 4 islanders. Okay? In 4 island, 4 जो tribe है इसके अंदर Kuru disease पाया जाता है. So Kuru is basically a neurodegenerative disorder caused by eating raw brain, and raw brain contain prions which are infectious proteins. These people have a custom in which they eat raw brain of their dead ancestors. ये उनका custom होता है. Okay? And when they eat it, so I told you that in that raw brain sometime an infectious protein is found. ठीक है? That infect these people. So they inherit this disease, or you can say they carry this disease. Okay? This disease is transmitted from one person to the other because of that kind of custom. Okay? But what these people believe that it is caused by sorcery and witchcraft. तो इनका belief भी important है ना? हम जो हमारी justification है that it is caused by prion, right? There are 2 justifications of this. One is what medical science says, okay, and what these people say, what 4 islanders says. Okay, we say it is caused by prions, and these people say that it is caused by sorcery. Even if you provide treatment, okay, first thing, whether they will accept the treatment or not, it is doubtful. Recently, there was an article in the Hindu, right, that many tribes in Indonesia and even in central India, they did not accept COVID vaccinations. Because their belief says something else, medical science says something else. If you want to provide treatment for this disorder to these people, and if you just consider this angle and reject this angle, can you really provide them with these drugs and treatment? No, they will not accept it. So anthropology gives you a holistic solution whereby you can incorporate both knowledges in order to solve their problem. You understand that? If we consider this thing, then whatever solution we will give, it will be more acceptable, right? Say if we want to give them medicines, so if we just include sorcerer, or you can say their shaman, their ojha, right? If we take him or her in confidence, naturally it will be more lasting solution for their problem, isn't it? ये solution होता है. बहुत सारे culture bound syndromes होते हैं. Culture bound syndromes are those syndromes which are not really there. Culture bound syndrome सही में होते नहीं हैं, वो सिर्फ psychosomatic effects रखते हैं. That means we people believe that there is such kind of disorder, right? One such disorder is Koro. Koro और Kuru में थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है? कोरो एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम है जो कि फिलीपाइंस और ईस्टर्न चाइना के लोग बिलीव करते हैं. They believe that their sexual organs are shrinking. Okay, actual में नहीं होता है, but they believe that their sexual organs are shrinking, and because of this, sometime they die. Fatal भी हो जाता है कुछ conditions में. Okay, so there are such disorders. We try to understand that why people have such disorders, right? You might have heard about that. You know, कुछ जड़ी बूटियां काम करती हैं, कुछ disorders का इलाज कर देती हैं. Right? You might have heard, काढ़ा तो सभी ने पिया है कोविड के टाइम पे,
right? Whether you are a North Indian, South Indian, or you are East Indian, North, extreme North, right? कहीं पे भी आप हो, आपने काढ़ा तो try किया होगा, right? So kind of, you can say local treatment, herbal treatment, Ayurvedic treatment, traditional medicine, we also try to understand that, right? There is a, you can say, specialized branch that is ethnomedicine, people's medicine. Ethno means people, medicine means, तो उनकी medical science, ठीक है? That we try to understand here. We try to understand kinanthropometry. Okay, what is kinanthropometry? Anthropology of sports, right? Which person is, you can say, an apt candidate for a particular sport, we can use kinanthropometry. Okay, you can say a tall person cannot be a good weightlifter, right? It requires short height so that the center of gravity can be a little closer to the ground, right? So different sports have different requirements, we can understand using that, right? How to train them, that also we can learn through kinanthropometry. How to design equipments, if I am holding it properly well, thickness of my fingers vary, yours vary, right? You have different finger thickness, but still all of us can hold it properly, right? That comes under ergonomics, right? Ergonomics is a branch of, you can say, kind of industrial design, right? How we can design equipments. Mobile phone pe aap lagate ho, aap tap karte ho, right? Effectively well, my thumb and your thumb effectively do effectively well, right? Computer keyboard, that also comes under the industrial design ergonomics. Chair design, car seat design, okay. If you just see that this 42 size shirt I can wear and some other people also can wear, how it is possible that we don't have same design, same physical makeup? There is variation, but still we can do it. How? That is on the basis of some measurements. Which measurements then? Anthropometry. What is anthropometry? Anthropometry is the measurement of body parts. And on the basis of these measurements, we can use. So do you see that what I am telling you, that anthropology is useful in every day, every moment of your life, right? We just don't realize. Okay? Then anthropology also studies like genetics wala ye portion, DNA fingerprinting, right? DNA profiling. Abhi DNA profiling bill का काम चल रहा है. नाम सुना होगा ना, DNA profiling bill के ऊपर इश्यू चल रहे हैं, है ना? इवन अभी जो क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल में भी कुछ चेंजेस आए थे. This course will be on both online and offline mode. Okay. Now, what I was saying, that it studies DNA fingerprinting, DNA profiling. So CID तो सभी ने देखा होगा, forensic anthropology, right? So application of anthropology to the question of law, right? How to identify missing children, right? You can say some victims of genocide, या फिर क्रिमिनल जो जिसने कोई रेप किया हो या फिर कोई और गलत काम किया हो उसको आइडेंटिफाई करना. सो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी वी कैन यूज देयर, ठीक है? सो एंथ्रोपोलॉजी ये बायोलॉजिकल वाला है. इन सोशियो कल्चरल व्हाट वी स्टडी हियर व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, लाइक सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ग्रुप्स, है ना, सोशल एसोसिएशंस. वी स्टडी सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, family, kinship, economic organization, political organization, religion. Okay, we study here theories. Okay, there are many theories. People fear that theories hai. Actually theories are tough if you make them tough. They are simple if you make them simple, right? And basically simple understanding कैसा है, कितना भी simple कर सकते हैं उसको. अगर ना ही पढ़ें तो बिल्कुल सबसे सिंपल है, राइट? थोड़ा सा पढ़ें थोड़ा टफ हो जाएगा.
तो डीप में पढ़ेंगे वो सिंपल हो जाएगा वापस, राइट? सो इट्स ए दिस काइंड ऑफ कर्व, राइट? देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं है. You don't read it, it's simple. You read it a little bit, it's tough. You read it in deep, it's simple. ठीक है? So there is no ऐसा relation नहीं है, simple एक curve relation है, ठीक है? So it's up to you that how we read. Theories are like to be, जो सबसे simple जानना है. So classical evolutionism, it says that society, culture, it evolve. Second theory is diffusionism. It says that culture evolve at one place and spread from here to the other. It diffuse. Functionalism, it says that every aspect of culture have some function. Say, what are the aspects of culture? Like marriage, family, economic organization, religion, these have function. Marriage का function है ना? Society की continuity is ensured. Division of labor, है ना? Legitimacy to the sexual access. These are functions of marriage. Family का भी function है. Kinship का भी function है. लड़ाई होगी तो कौन बचाने आएगा? आपका रिश्तेदारी तो बचाने आएगा ना? तो kinship का भी function है. अगर हम बात करें economic organization, उसका भी function है. ठीक है? Economic organization का क्या function है? सारा काम economy से तो चल रहा है. Production, distribution and consumption, everything is relating to economic organization, right? Even economic organization determine what kind of family will be there. The family of the agriculturists are normally joint family. If you go into the band, forest जो dwellers होंगे, foragers होंगे, hunter gatherer, उनके अंदर joint family नहीं मिलेगी ज़्यादा बड़ी. ठीक है? Because they have to be mobile. खाने के लिए इधर निकलना जाना पड़ सकता है, उधर जाना पड़ सकता है, right? Joint family mainly found in the agricultural societies. So it is the subsistence, it is the economy which is dominating over these factors, isn't it? There are many tribes in India, like Khasa tribe. Khasa tribe have polyandry. Why they have polyandry? Because they live in hilly terrain. Okay? Hilly terrain, they live near देहरादून. देहरादून के पास हिली टेरेन है. अगर हिली टेरेन है तो वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, राइट? सो इफ ऑल ब्रदर्स मैरी, पॉपुलेशन विल एक्सपेंड. So then there will be imbalance between the resource production and the population. So basically they practice polyandry. कि अगर 4 brothers हैं, they will have 1 wife. Maximum they will produce 2-3 children, right? So basically this is an adaptive strategy. Okay, so the kind of social organization, or you can say family and marriage, is somehow, you can say, linked to the economy, isn't it? That's how you have to look, right? So you study economic organization, political organization, religion, right? Religion का function है. Religion का क्या function है? Functionalist कहते हैं religion का भी function है. पेपर वाले दिन पूजा करके जाते हो ना सभी लोग, क्यों करते हो? हाँ, होप देता है, एंजाइटी को लोअर करता है, राइट? हाँ, सो बेसिकली दैट इज द फंक्शन ऑफ रिलीजन. सो रिलीजन इज ऑल्सो फंक्शनल. सो व्हाट दीज पीपल से, फंक्शनलिस्ट से, दे से दैट एवरीथिंग इज फंक्शनल. Whatever we have, whether it is marriage, family, kinship, religion, economic organization, political organization. Political organization का function क्या है? I believe all of you know. To maintain peace inside and to maintain peace with the outsides, right? So that is the function of this. Now, इसके बाद अगर हम देखें, there is one theory, structuralism, that society का एक structure है, right? And वो structure कहाँ से आता है? बोलते हैं कि you have an unconscious structure in your brain and that is reflected outside in the society, right? So the societal structure is the product of the unconscious mental structure that we have, right? हमारा brain पहले structure करता है, बाहर reality बाद में है. Okay, that is one school, structuralism. Then we have culture personality school, which says that culture influences personality. That means कि अगर आप देखोगे एक जगह के लोगों की personality में काफी similarities होती हैं. You say the people live in Western UP, they have similarity in the personality because they undergo similar socialization. Socialization मतलब upbringing,
उनका पालन पोषण कैसा हुआ, पेरेंट्स से क्या सीखा, दैट इज सोशलाइजेशन. सो दे अंडरगो सिमिलर सोशलाइजेशन, दैट इज वाइज दे डेवलप सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. सो कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल, हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी इन टर्न इन्फ्लुएंसेस कल्चर ऑल्सो. क्योंकि बड़े होके आपकी तो पर्सनैलिटी बन गई ना. नाउ यू विल नर्चर योर ओन किड्स. सो कल्चर पर्सनैलिटी, दो टू वे रिलेशन. Then we have cultural materialism. It says that material things से culture निकल के आया है. Okay? Culture निकल के आया, that means एक scholar है मार्विन हैरिस, वो कहते हैं कि cow worship is because of the material benefits that the cow provides, right? Not the other way around. It is not because that it is written in the scriptures that we worship cow. It is because of the material benefits that cow is more useful alive than dead. That is why this belief have generated. So material conditions lead to, or you can say it, they shape our belief. That is what it says. Okay? Material conditions shape our belief. That is the idea of cultural materialism. Similarly, we have symbolic school, we have cognitive school, we have postmodernism, right? So symbolic school कहता है कि there are symbols. Culture consists of certain symbols, and if you just read those symbols, you can understand the culture. That is symbolic school. Cognitive school says that understand human cognition, how I think. Say, if I call it blue, right? You will also say that it is blue. But if you think that there are some society, they don't have this color blue in their language, they don't see it as blue, then it's your terminology that you call it blue. It need not to be, you can say, universal category. There are tribes which distinguish between dark and light colors only. How would you say? They will not recognize this blue. So you have to understand their conception of their own world rather than what you think about this thing. That is cognitive school. Postmodernism rejects modernism. Scientific theory को reject करता है वो सिर्फ, right? That वो कहता है कि कुछ भी सच नहीं है. That is postmodernism. There are no universal theories. तो मतलब बात ये हुआ कि वो जो कह रहे हैं वो भी सच नहीं है. Effectively यही बात हुआ ना. If I say that nothing is true, that means whatever I am saying is also not true, right? That is postmodernism. So these are the theories. Then we have research methods that make anthropology unique. Right? See, sociology studies human society. Anthropology also studies human society. How we differ? We differ in the way we create knowledge. Anthropologists go to the field, they stay with the people for 4-5 years, they collect data by their personal observation. Okay? Sociologists क्या करते हैं? अपने चेयर पे बैठ के कुछ सर्वेज का डेटा निकालेंगे, उसके बेस पे थ्योरी दे देंगे. Anthropologists go to the field and then they collect data. That is how we differ, right? There are some other methods that we are going to talk here. Linguistics, we talk about the origin of language, we talk about the linguistic diversity, we talk about how language influences our thought and how culture influences language. Both way, language influences culture and culture influences language, right? See, there is one thought which says that language determine your worldview. Do you agree with it? Language determine your worldview. That means how you see this world is determined by the language. Just now I gave you example that some people have darker and lighter shades only about color. So they see the world on those two shades only. You see it blue, that person may not see or call it blue. So their worldview is shaped by their language, your worldview is shaped by your language. Is it clear? That's as simple as that. So language influence your behavior, and your behavior is cultural behavior, isn't it? That's what we study here. We study here about endangered language, how we can preserve that, right? In archaeology, we talk about Paleolithic culture, Mesolithic culture, Neolithic culture, Indus Valley civilization, etc., etc. ठीक है? ये हमारा overall syllabus का overview है. Now let us talk about the trend that is the main focus of our this discussion of today.
right? What is the trend of UPSC and how we can deal with such questions? That let me talk. Okay, so first thing, that normally people used to read some 200-300 questions and then they think that, so let me distinguish it with the traditional thought so that you can see it properly. People used to memorize just 200 questions, maybe 250 questions. उनका सभी का मॉडल आंसर तैयार करके रख लेते थे, and then they think, ऐसा सेलेक्ट होने वालों के पास उससे ज्यादा होता था naturally. They don't realize just on 250 questions, even in the past also, because without understanding you cannot write questions. Okay, so that was the traditional approach, and the focus basically was on few areas, like they used to prepare biological part, और उसमें भी कुछ गिने चुने एंगल. They separately prepare socio-cultural effectively. थ्योरीज को कम करते थे, बट सोशो-कल्चरल इंस्टीट्यूशंस वाला जो पार्ट, मैरिज फैमिली वाला, प्रिपेयर कर लेते थे, राइट? दे डोंट टच ऑन आर्कियोलॉजी मच. आर्कियोलॉजी को छोड़ ही देते थे इफेक्टिवली, उसमें कुछ पॉइंट्स कर लेते थे. आर्कियोलॉजी वाज मिसिंग. Least emphasized portion. Research method was very least emphasized method, right? Research method you can not study alone, right? Along with theories you have to read. So theories. See, let me give you examples of few, right? What are those examples? Last 2-3 years, UPSC is asking questions like phenomenology, they are asking about experiential ethnography, ये वर्ड सुनने में टफ लग रहे हैं, टफ है नहीं. फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फिनोमिना, हाउ यू एक्सपीरियंस इट एंड हाउ यू डिस्क्राइब इट. ठीक है? Phenomenology is the study of social phenomena, how you experience it and how you yourself describe it. That is phenomenology. समझ गए ना? टफ नहीं है. फिनोमिना मतलब कोई भी चीज आपके आसपास हो रही है, आपने खुद एक्सपीरियंस की और आपने खुद बताया कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया. Say you have touched this, then you will say that I have touched this, and you are just telling it, right? You have experienced something else, then you describe it, how you have seen it. You have traveled through, say, metro, then you are describing it. So it's a kind of that thing, right? Experiential ethnography, ये आपको थोड़ा सा heavy लग रहा होगा. Ethnography is a term that is derived from two words. Ethnos, okay, that means people, and graphos, that means description. जैसे ज्योग्राफी नाम सुना होगा, जियो प्लस ग्राफोस. सो ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन. सो इन ए सेंस इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल, राइट? सो इफ आई कॉल इट पीपल, पीपल मीन्स व्हाट? कल्चर्स, isn't it? So description of cultures or description of people. Description of what aspect of people or cultures? So their environment, their race, their language, their economic organization, their political organization, their kinship, every aspect is described. That is ethnography. Experiential, just add phenomena here. Experience के base पे ethnography, that is
एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी। इज इट क्लियर? आप एक्सपीरियंस करोगे तभी डिस्क्राइब करोगे ना, सो दैट इज एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी। सो इसको इनकॉर्पोरेट कर दो उसमें। दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। सो बेसिकली दीज थिंग्स आर नेग्लेक्टेड बिकॉज ये थोड़ा सा डीपर लेवल डिमांड करती हैं, ठीक है। सो ये डिमांड उसके बाद अगर हम देखें, इवन इन बायोलॉजिकल पोर्शन प्राइमेटोलॉजी वाज इग्नोर्ड। ठीक है, व्हाट इज प्राइमेटोलॉजी? स्टडी ऑफ प्राइमेट्स। हु आर प्राइमेट्स? वी आर प्राइमेट्स, एप्स आर प्राइमेट्स, ठीक है। तो उनकी स्टडी, जैसे कि क्वेश्चंस अगर हम देखें 3-4 साल में, तो द क्वेश्चंस हैव बीन लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमेटोलॉजी? UPSC have asked the contribution of Jane Goodall. Jane Goodall is a very famous primatologist. Google करके देख लेना, you will find many videos of her working in Gombe Stream National Park, Tanzania. उनके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जस्ट यूट्यूब पे डाल के देख लो जेन गुडाल, राइट? जेन गुडाल का नाम डाल के देखना, यू विल फाइंड। सो शी इज अ वेरी फेमस प्राइमेटोलॉजिस्ट। सो प्राइमेटोलॉजी वाज इग्नोर्ड, ठीक है। पैलियो प्राइमेटोलॉजी और पैलियो एंथ्रोपोलॉजी उस पे भी थोड़ा सा लिमिटेड ही था, okay. This is general ignorance that I can say. What is specific ignorance is that people study marriage from the marriage perspective, जो syllabus में लिखा हुआ है, okay. They study kinship from the kinship, जो कि syllabus में लिखा हुआ है. They don't try to link one topic with the other. Say for example, UPSC have asked one question that was how the notion of conspicuous consumption is linked to construct of power and distributive justice. इन दोनों से कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कैसे जुड़ा हुआ है? सो व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन? ये एंथ्रो नहीं है यहाँ पे, ये जनरल इंग्लिश का वर्ड है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखावे के लिए खर्चा, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन मतलब दिखावे के लिए खर्चा। महंगी गाड़ी खरीदना, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, ठीक है। महंगी वॉच 5-5, 10-10 करोड़ की घड़ियां खरीदना, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। शादी पे लैविश खर्चा करना, दैट इज conspicuous consumption, okay. Now why this question, okay, how it linked to construct of power? Construct of power मतलब power ये आपका आ जाएगा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, जो आपका चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर यूनिट अगर मैं बात करूं, यूनिट 3 इज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उससे ये है। दिस इज यूनिट 4। सो दोनों को लिंक करवा के पूछ रहा है बाप से वो। यू अंडरस्टैंड दैट? सो अनलेस एंड अंटिल यू जस्ट थॉट इट दैट वे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। सो कैसे लिंक किया उन्होंने? कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन और कंस्ट्रक्ट ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब सभी के पास इक्विटेबल आ जाना, तो ये अगेन इसी से, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिट 3 से, ठीक है। होता क्या है, बहुत सारी ट्राइब्स में अलग अलग ऐसे कस्टम्स हैं, जैसे कि एक ट्राइब है क्वाकुइतल, ठीक है। क्वाकुइतल जो ट्राइब है, इसके अंदर एक कस्टम पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टलेच, ठीक है। पोर्टलेच इज ए काइंड ऑफ कस्टम इन विच देयर इज इलैबोरेट गिफ्ट गिविंग, मतलब जितना गिफ्ट दोगे उतना ही आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी, ठीक है। मतलब जो आपके पास है सब लुटा देना है, दैट वाज द पर्पस हियर। अगर बच जाए कुछ, देन जस्ट थ्रो इट इन द सी और बर्न इट, दैट इज, जो जितना एक्सॉर्बिटेंट गिफ्टिंग करेगा या फिर जला देगा बची हुई अपनी वेल्थ को, राइट, दैट विल बिकम द चीफ। सो चीफ कैसे बनेगा? चीफ मतलब पावर। पोर्टलेच में ऐसे होता है, ठीक है। सिमिलरली एक पपुआ न्यू गिनी पे एक है, वहां पे मोका सिस्टम है। मोका सिस्टम में अगर आपने मुझे 1 रुपया दिया, मैं आपको 2 रुपया दूंगा, मतलब
इंक्रीमेंटल गिफ्ट गिविंग है वहां पे मौका सिस्टम के अंदर, राइट? सो वो भी यहां पे आप जोड़ सकते हो इसी सेम क्वेश्चन में, isn't it? So now what they are doing, they are linking things. Okay, last year again there was another question. Other question was animism and deep ecology. Animism and deep ecology. Okay, this was a question in 10 marker. Animism is a kind of belief, right? Belief in spirits or soul. Soul worship is animism. This is derived from a Latin word anima, that means soul. पिंडदान करते हैं हम हिंदुइज्म में पिंडदान होता है ना, श्राद्ध करते हैं. श्राद्ध इज बेसिकली स्पिरिट वर्शिप, सोल, एंसेस्टर्स की सोल का वर्शिप है, दैट इज एनिमिज्म. इज इट क्लियर? सो एनिमिज्म इज सोल वर्शिप, ठीक है. और सोल वर्शिप और डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी एक तरह से एक एनवायरमेंटल फिलोसफी है, ठीक है. एनवायरमेंटल फिलोसफी ये बोलती है दैट एवरी component of the ecosystem, whether biotic or abiotic, have some relevance, inherent value. हर component का inherent value है, whether वो biotic हो या abiotic हो. Animism क्या कहता है? हर एक चीज का एक soul है, whether it is biotic or abiotic. That means animism कहता है that this pen also have soul, river also have soul, trees also have soul, these you can say pahad, mountains also have soul, right? Don't you think there is a connection between the two? It may be the result of the disbelief. क्योंकि अगर देखोगे animism में, you know, people believe that our ancestors' soul live in a particular patch of forest. ये लोग क्या बिलीव करते थे, जो नॉर्मली ट्राइबल बिलीफ है ना एनिमिज्म, तो इट इज काइंड ऑफ बिलीफ इन सोल्स और स्पिरिट्स. ट्राइबल बिलीव दैट आवर एंसेस्टर्स सोल लिव इन द फॉरेस्ट पैच और इट लिव इन अ पर्टिकुलर हिल टॉप. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कोंद इज ए ट्राइब, डोंगरिया कोंद. Dongaria Kond is a tribe. It lives in Niyamgiri hills of Odisha. Okay? These people believe that their Niyam Raja, जो कि उनका भगवान है, it lives on the hilltop of Niyamgiri hills. Okay? हुआ क्या? That government have allocated this Niyamgiri hill to Vedanta. Vedanta is a mining company, है ना? अनिल अग्रवाल की कंपनी है ये, है ना, वेदांता. इसको दे दिया गवर्नमेंट ने. अब ये नियमगिरी हिल को पूरा लोअर डाउन कर देता, बिकॉज इट विल माइन द बॉक्साइट फ्रॉम हियर, ठीक है. दीज पीपल प्रोटेस्टेड कि नहीं, ये तो हमारे भगवान का घर है, हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय इट. गवर्नमेंट, दिस कंपनी एंड गवर्नमेंट हैव टू अबंडन दैट प्रोजेक्ट. सो what happened? We could protect the rich biodiversity of Niyamgiri Hill. That belief that our king, you can say our Bhagwan lives here. So basically, whether it is living or non-living, everything have soul. ठीक है? That belief kind of thing lead to conservation of this. So this philosophy, deep ecology, is also connected. Deep ecology think that whether it is biotic component or abiotic component, everything have inherent value. It says that everything have soul. ठीक है? दोनों connected belief है. So what examiner is asking you to connect religion with environment. ठीक है? So they are just asking you to think beyond the compartmentalized mindset. Now they want you to think beyond it, and that is what you are going to do. आपको रट्टा मार के जाने वाला इंसान बनना है या फिर आपको दिमाग लगा के चीजों का सॉल्यूशन देना है, that is what you have to decide, right? So UPSC is looking for a person who have a well thought out mind,
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप आते हैं। नॉर्मली क्या होता था कि क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 का एक सेग्रीगेशन होता था। नाउ नो लॉन्गर दैट एग्जिस्ट नाउ, राइट? They are asking questions, topics from paper 2 in paper 1, right? They have asked it, I think last year, they have asked a question, Khap Panchayat. This is the question only. The only thing that they did, normally this question is from Indian society, है ना? जाट हरियाणा के अंदर हम देखेंगे तो खाप पंचायत बहुत सुना होगा आपने, है ना? So खाप पंचायत normally is from this portion, इंडियन सोसाइटी जो हमने बताया था, है ना, जब पेपर को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने पेपर 1 में पूछ लिया। अब बहुत सारे लोगों का तो हवा गुल हो गया। द रीजन इज बिकॉज दे हैव अ मेंटल ब्रेकअप कि ये चीज तो वहीं पे ही पूछा जाएगा। ओके, बेसिकली देखो क्या होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, क्या टाइप होते हैं? जनरली 4 टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंड एक टाइप है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बैंड मतलब छोटा सा एक बैंड होता है, 40 से 100 लोग हो सकते हैं उसमें। एंड दिस इज इगैलिटेरियन, कोई ऊंचा है कोई नीचा नहीं होता इसमें बैंड के अंदर, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कंसेंसस बेस्ड होती है। दूसरा होता है ट्राइब। बैंड कहां पाया जाता है? हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स में। जहां हंटिंग गैदरिंग होता है तो वहां पे कुछ किसी के पास ज्यादा और कम तो होता ही नहीं है, सभी के पास बराबर है। अगर किसी ने हंट किया तो सभी का साथ शेयर होगा। ट्राइब जो काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, ट्राइब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। ट्राइब जो है हम वैसे भी पढ़ते हैं, ट्राइब इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हियर। इसमें बहुत अलग अलग तरह की हो सकती हैं। ट्राइब कैन बी किनशिप बेस्ड, रिश्तेदारी के बेस पे, एंड इट कैन बी नॉन किनशिप बेस्ड। ठीक है, किनशिप बेस्ड मींस जो ऑफिसर्स होंगे, जो उस पॉलिटिकल ऑफिशियल्स होंगे, वो सारे रिश्तेदार होंगे। ओके, सो इट कैन बी लाइक लीनिएज बेस्ड। लीनिएज पता है ना आपको, वंश के बेस पे, या फिर क्लैन बेस्ड। ठीक है, क्लैन मतलब गोत्रा बेस्ड। सो एक खाप पंचायत तो क्लैन पंचायत ही तो है। If I just say this is effectively this is a clan panchayat, na? So clan based kinship, you can say this tribe like political organization है ये। That is how you have to link things, कि ये डायग्राम बना के भी आप यहाँ पे दिखा सकते थे, सिंपल। That could have been very simple if you just thought, but क्या होता है कि हम limited thought लेके चल रहे होते हैं, सोचते ही नहीं है एक लाइन से beyond, right? If the people have a good understanding of the subject matter, naturally such questions can be easily done. इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बताया अगर होगा, we could have done it. So basically the problem lies that whether we have understanding or not, right? So if you have understanding of the subject matter, you can write these questions very effectively. पेपर बताया ना टफ उसके लिए जिसने पढ़ा नहीं है, ठीक है। जिसने पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए पेपर वो इजी होता है। नाउ व्हाट इज द ट्रेंड? बेसिकली फर्स्ट इज इंटरलिंकिंग वेरियस टॉपिक्स। दैट मीन्स हाउ इट इज इंटरलिंकिंग? यू कैन से बायोलॉजी वाले को सोशो कल्चरल से लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से लिंक कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लिंक कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स को एक दूसरे से लिंक करना, दैट इज हाउ दे आर डूइंग, राइट। सो इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस टॉपिक्स, दैट इज द फर्स्ट ट्रेंड, दैट इज सिंपल। बेसिकली इसमें नंबर भी अच्छे आते हैं जो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि उनके कोई वो है, राइट। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। Then normally what was done, that they ask theories specifically, okay, they are asking theories थोड़ा जो tougher side में है, थोड़ा सा जो abstract thinking वाली है उनको जा रहे हैं, right, theories की भी understanding। दूसरा, theories वो अकेला नहीं पूछ रहे हैं,
थ्योरीज का एप्लीकेशन पूछ रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, दैट जो हमने बोला पोर्टलेज, ठीक है. सो पोर्टलेज को स्टडी करने वाला स्कॉलर उसने कौन सा माइंडसेट लगाया, उसके ऊपर वो चले जाते हैं. रिसर्च मेथड और थ्योरीज को इंक्लूड करा के वो बात कर रहे हैं. पहले पूछ लेते थे कि सिंपल क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा वो लिंक करवा के पूछ लेते हैं, ठीक है. सो दैट इज अनदर ट्रेंड यू कैन से. ओके, लिंकिंग ऑफ थ्योरीज विद एप्लीकेशन एज वेल एज रिसर्च मेथड, ये एक ट्रेंड हो गया. देन दे आर लिंकिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो. पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू लिंक, ठीक है. ऐसा नहीं है कि पेपर 1 को और पेपर 2 को आप बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज्ड माइंडसेट से देखो. नो, दे वांट यू टू थिंक एज एंथ्रोपोलॉजी एज होल. एक ही है एंथ्रोपोलॉजी. ओके, देन बेसिकली अदर देन दैट इफ यू सी, देन दे आर आस्किंग फ्रॉम आर्कियोलॉजी ऑल्सो. ओके, आर्कियोलॉजी पे भी थोड़ा उनका एम्फेसिस है. ओके, पहले आर्कियोलॉजी लोग रिजेक्ट कर देते थे, बट आर्कियोलॉजी इज नॉट अ नेग्लेक्टेड पोर्शन. आर्कियोलॉजी में से भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है. आर्कियोलॉजी से भी वो क्वेश्चंस थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चले जाते हैं. तो मेनली इफ यू लिंक टॉपिक्स, if you apply theories and its application, if you link paper 1 and paper 2, I can suggest that, I can assure you that if you do it in this manner, ना, अगर नॉलेज को लिंक करके पढ़ोगे, एक तो भूलोगे नहीं. क्यों? क्योंकि अगर आपने कंपार्टमेंट में डाला, एक कंपार्टमेंट खाली, तो वो नॉलेज साफ हो जाएगा. बट अगर उसका लिंक आपने दूसरे टॉपिक से लगाया, तो एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू रिमेंबर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स. अगर कुछ याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो कुछ लिखने को भी तो बचेगा ना. अगर लिंक बनाया था, कुछ याद नहीं आता है, बहुत बार होता है दैट वी फॉल ब्लैंक. हम एग्जाम में बैठे बैठे ऐसा होता है कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वी आर अनेबल टू इवन थिंक. इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक, तो व्हाट टू डू एट दैट टाइम? इफ यू हैव सम कनेक्शंस फ्रॉम अदर टॉपिक्स, naturally you can write at least something, isn't it? So that things can be very important for you if you just think that way. Okay, so, and if you think these all things, right, if you say that the bottom line of all this is conceptual clarity. See, if you have the concept, then only you can connect one topic with the other, right? If you don't have clarity, then you cannot link. ठीक है, आप connect ही नहीं कर पाओगे. That is what is there. Now, how we are going to do it? What will be our strategy of doing it? So our focus will be, number 1, conceptual clarity. That means we will understand each and every topic that is there. Second, there will be dictation in the classroom. Third, you will be given daily questions. On a daily basis, I will provide you questions, right? See, whatever you have understood, you have noted down and you have practiced at home. Okay? Then after that, once 1 unit, 2 units are over, then there will be test. Okay? So there will be double verification whether you have learnt it or not, right? 5, there will be, you can say, test series, complete test series. Okay? After that, you know, to supplement your dictation and conceptual clarity, you will have booklets also. There will be 6 booklets. Okay, and I can assure that nothing what we discuss in the class, what you have been given in your booklet, you need not to read anything. For online students, the booklets will be shipped to their home. ठीक है, आपको सीधा मिल जाएगा वो. So this will be our focus. My focus primarily will be on conceptual clarity so that you can understand the thing and then its application, right?
If you do it regularly, naturally you are revising and again. Whenever you are writing test, you are revising it again and again. It will help you to retain. See, retention or memory, it is a product of 2-3 factors. One, understanding. Second, you have micro notes or not. Right? So whatever I dictate you here, I would suggest that everything you just condense it just in one page. Right? उस one page में क्या क्या लिख लो, कुछ headings लिख लो और कुछ case studies या examples लिख लो. That will be sufficient for you to understand things. ठीक है? ये हमारा focus रहेगा. Okay? एक general understanding मैं बताता हूँ आपको. That if you have understanding, that means your conceptual clarity, है ना? Understanding, that means your conceptual clarity. So if you have understanding, that means you can analyze things. That means you can link one topic with the other also, right? And if you have understanding, naturally you can retain also. क्योंकि अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो लिंक करके आप उसको रिटेन करना भी जानोगे. Okay, and if you have analysis and retention, naturally you can reproduce it. In the examination. ठीक है? So understanding is the most important key from where everything flows down. ठीक है? So अगर समझ में आ गया चीजें, तो लिंक करने के लिए तो सब कुछ, अगर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा तो आप भी कोशिश करोगे, आपका भी दिमाग फ्लो करेगा. Whenever you read something, you study something in your GS paper also, you will try to connect and absorb that thing in the anthropology as well. ठीक है? तो ये सब चीजें आपका linked है everything. Okay? Now this is it. Any question anybody have, please do ask, whether online or offline. Yes, any question regarding anthropology or anything else, please do ask. हाँ बिल्कुल मिलेगा. जैसे कि आप देखो कि कोविड किस चीज से फैल रहा है. हाँ, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है. आपको मास्क लगाने को बोला जाता है, आपको भीड़ में जाने से मना किया जाता है. सो आपको सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया जाता है ना, तो वो डिजीज तो बायोलॉजिकल है. दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैंने कुरु आपको समझाया, कुरु मैंने आपको बताया. कुरु मैंने बोला कि वैसे तो डिजीज तो प्रायोन से होता है, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि विच क्राफ्ट से होता है, सोर्सरी से होता है. ऐसे लिंक्ड है दोनों. मैंने आपको एडेप्टेशन क्या बताया? एडेप्टेशन, सी इफ यू गो टू से जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे ऑक्सीजन कम है, यहां पे ऑक्सीजन नॉर्मल है, isn't it? So when you reach there, so naturally your breathing will suffer a little bit, है ना? आप धीरे धीरे क्या करोगे अडेप्ट होने के लिए? आप सांस ज्यादा गहरा गहरा लोगे, ज्यादा सांस लोगे. वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना? वहां पे जाके आपको स्पेशल डाइट भी दिया जाएगा. वो कल्चरल प्रैक्टिस है. ठीक है? अगर आप देखते हो कि आप बिल्कुल कनाडा पहुंच जाओ, ठीक है, तो वहां का खाना एक फैक्टर हो सकता है जो को आपको ठंड से हेल्प कर सकता है. ठीक है? खाना कल्चरल है. ठीक है? बायोलॉजिकल आपकी बॉडी कांपेगी एंड इट विल जनरेट हीट. ठीक है? सो बायोलॉजी एंड कल्चर बोथ आर लिंक्ड. ठीक है? दोनों को हम अगर हम देखें कोई डिजीज के रेस्पेक्ट में, अडेप्टेशन के रेस्पेक्ट में, हर जगह पे दोनों चीजें लिंक्ड है. जैसे कि इवोल्यूशन इज बायोकल्चरल, इवोल्यूशन इज बायोकल्चरल, अडेप्टेशन इज बायोकल्चरल. ठीक है? सो बायोकल्चरल मतलब दोनों ही जुड़े हुए हैं. डिजीज इज बायोकल्चरल, ग्रोथ इज बायोकल्चरल. ह्यूमन ग्रोथ को पढ़ते हैं. सो द जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो आपको पेरेंट्स से मिला है, और आप किस तरह का खाना खा रहे हो, कितनी डिजीज से कांटेक्ट में आए या नहीं आए, दैट इज लिंक्ड. सो एवरीथिंग इज बायोकल्चरल इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. ठीक है? चाहे आप इवोल्यूशन की बात करो, चाहे आप अडेप्टेशन की बात करो, डिजीज की बात करो, और यू कैन से एनी अदर थिंग, ग्रोथ की बात करो, एवरीथिंग इज बायोकल्चरल. ठीक है? अगर आप डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो तो वहां पे भी बायोकल्चरल है.
बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ women to reproduce as well as cultural practices की religion क्या कहता है? Every woman should reproduce a child, otherwise she will be declared कि ये तो नहीं produce कर पा रही है, right? She will be branded like, you know, in some words, derogatory words like banj and others are being used, right? तो religion क्या बोल रहा है? तो वो भी population को affect कर रहा है. So demography में भी biocultural है, हर चीज, sports में भी biocultural ही है. ठीक है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी, इनेट कैपेसिटी एज वेल एज खाना कैसा मिल रहा है, ट्रेनिंग कैसी मिल रही है, वो भी बायोकल्चरल है. Isn't it? Everything is biocultural. और बताओ, कोई भी क्वेश्चन वी विल टेक एवरी. हाँ, व्हाट? केस स्टडीज में, केस स्टडीज जो आपको जरूरत होगा उसी के हिसाब से. जैसे मैंने अभी आपको पोर्टलेज बताया, वो एक केस स्टडी है. वो स्टडी किया था फ्रैंक बोवाज ने. फ्रेंच बोवाज अमेरिका के बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जर्मन बोर्न अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनको पापा बोवाज भी बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज ही ट्रेन्ड सो मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सो ही स्टडीड वन ट्राइब क्वाकुइटल. इन दैट ही ऑब्जर्व्ड दिस पोर्टलाज. ठीक है, तो ऐसी ऐसी स्टडीज होंगी. जैसे कुरु एक केस स्टडी थी. ठीक है, वो कुरु केस स्टडीज क्या है, हम एग्जांपल्स की तरह यूज करेंगे टू जस्टिफाई व्हाट वी आर राइटिंग, राइट? दैट विल एनहेंस द वैल्यू ऑफ योर आंसर. ठीक है, केस स्टडीज मेनली मेंट फॉर एनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग. इज इट क्लियर? जो आप लिख रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए केस स्टडीज है ना? हाँ, और बताओ. केस स्टडी का लिटरल मीनिंग है द होलिस्टिक स्टडी ऑफ एनी केस. व्हाट इज केस? केस कैन बी अ सोशल इवेंट, केस कैन बी अ फिनोमिना, केस कैन बी कैन से विलेज सेटिंग, कुछ भी हो सकता है केस. ठीक है, एक रायट एक केस हो सकता है. राइट लाइक सिचुएशन कहीं पे हुई है, वो भी एक केस हो सकता है. केस स्टडी उसकी भी हो सकती है. ठीक है, तो इंटेंसिव और होलिस्टिक स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर केस इज केस स्टडी. ठीक है, केस स्टडी एक तरह से रिसर्च मेथड भी है. हाँ, एनी क्वेश्चन? ओके, कैन वी वाइंड अप देन? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Yes, it will be sufficient for you to cover entire syllabus, right? The class duration will be 3 hours, 6 booklets that will cover entire syllabus. You need not to refer anything. Class recorded video रहेंगे, I think 1 or 2 time you can watch them. Okay. But if you want to take up the questions live in the class, you have to attend it live only. Otherwise, you can watch it recorded. Yes. So, thank you. All the very best.